1 shrewd, adjective. Zirek, zishour, danishmand. Having or showing sharp powers of judgment, astute. 2 abstention, noun. Parhez, istinab. An instance of declining to vote for or against a proposal or motion. 3 debacle, noun. Sharmnak nakami, mukammal shikast. A sudden and ignominious failure, a fiasco. 4 simultaneous, adjective. Backwacht, ek saat, ek hi wacht mein. Occurring, operating, or done at the same time. 5 adamant, adjective. Sakhti se qaim, atal, aliyal. Refusing to be persuaded or to change one's mind. 6 concede, verb. Kabul karna, taslim karna, etiraf karna. Admit or agree that something is true after first denying or resisting it. 7 discard, verb. Bartaraf karna, nikal phekna. Get rid of someone or something as no longer useful or desirable. 8 erode, verb. Kaat dena, khatm kar dena, kam hona. Of wind, water, or other natural agents, gradually wear away, soil, rock, or land. 9 bleak, adjective. Tarik, rukha. Of an area of land, lacking vegetation and exposed to the elements. 10 speculation, noun. Qiyas arai karna, satabazi. The forming of a theory or conjecture without firm evidence. 11 myriad, noun. Behad, kasir tadad, 10,000, beshumar. A countless or extremely great number of people or things. 12 proximity, noun. Kharabat, rishtadari, nazdiki. Nearness in space, time, or relationship. 13 credential, noun. Tasdeeq nama, sanad, कागजात जो हकीकत की तस्दीक करे. A qualification, achievement, quality, or aspect of a person's background, especially when used to indicate their suitability for something. 14 predicament, noun. बुरी हालत, खतरनाक सूरत हाल. A difficult, unpleasant, or embarrassing situation. 15 flawed, adjective. गलत, खराब, नाकिस. Having or characterized by a fundamental weakness or imperfection. 16 sanity, noun. ज़हनी अक्लमंदी की हालत. The ability to think and behave in a normal and rational manner, sound mental health. 17 prevail, verb. बाकी रहना, कायम रहना, कायल कर लेना. Prove more powerful or superior. A way forward. Zahid Hussain. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 18, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. The Punjab Assembly has finally been dissolved and the KP Assembly is the next to go. The development has set in motion the process of elections in the two provinces. That brings a shaky coalition government at the center, with its razor-thin majority in a truncated National Assembly, under further pressure. The options for the ruling alliance are running out. The endgame has begun. It all started last week, with the PTI-PMLQ government winning the vote of confidence in the Punjab Assembly. It came as a shock to the PMLN, which till the last moment, was expecting some defections within the provincial government's ranks. That did not happen. The PMLN lost the game of snakes and ladders. Another setback for the party came when the wily Punjab Chief Minister Parvez Elahi dissolved the provincial assembly against all expectations. In this situation, the PMLN has been left with no other choice but to prepare for elections in the province that are to be held within 3 months. Imran Khan is also planning to take the battle to Islamabad.
He has hinted at his party returning to the National Assembly and forcing the Prime Minister to take a vote of confidence. While another U-turn, it would be yet a shrewd move by the former Prime Minister, given the coalition government's vulnerabilities. Khan, belatedly, seems to have realized that abstention from the National Assembly could keep his party out of the process of forming the caretaker government for the coming general elections. The lame duck administration is unable to take the tough decisions needed. But the return will not be that smooth as the PTI legislators in the House had submitted their resignations. It is apparent that Khan's decision to go back to the Assembly is not to break the political deadlock and help draw up a mechanism for the elections, but to bring down the PDM government. Meanwhile, with some reports of possible defections in PMLN ranks, it could be a serious challenge for the Prime Minister to prove his majority. The Punjab debacle certainly has had a demoralizing effect on the party, though the leadership has put on a brave face. Even if the Prime Minister manages to scrape through the confidence vote, the ruler's capacity to govern has been seriously hampered. With two major provinces going into election mode and the entire focus on the coming provincial polls, it would make it extremely difficult for the centre to govern. It is unprecedented that elections would be taking place in only two provinces. An anomalous situation has been created that could have serious implications for the political and electoral process. Neither side is willing to back down from their rigid position and agree on a mechanism for simultaneous elections in the provinces and the centre. While Imran Khan is adamant about bringing down the entire edifice, the ruling coalition is not willing to concede that it has already lost the game and to agree to early general elections. With the economy in dire straits, a lame duck administration that is unable to take the tough decisions needed will pull down the country further. The finance minister doesn't want to discard his weird views on managing the economy. A top commercial banker recently warned of a systemic failure if urgent measures were not taken to address the current economic crisis. The situation is becoming increasingly untenable for the beleaguered dispensation. Although PMLN leaders insist that the National Assembly would not be dissolved before the end of its term, the game is fast slipping out of its hands. The Sharif's party has already lost huge political capital, and prolonging its rule could further erode its support base in its former stronghold in Punjab. The PDM government is presiding over the complete collapse of the economy, which would have far-reaching political implications for the country and the democratic process. This extremely bleak scenario also raises the question of whether the announcement of an election date could help stabilize the political situation. There is no indication yet of the rival parties coming together to bring down the political temperature and enter into a serious discussion on the schedule and modalities of elections. More importantly, what will happen to the economy in the meantime? There is a lot of speculation about a prolonged interim government of technocrats to fix the economy before the country votes. It's not the first time such an idea was floated. We have heard such suggestions in the past too. It may sound attractive to many who look for a solution to our myriad political and economic problems outside the political system. But there is no evidence of any unelected setup delivering on the economic, political, and social fronts. There is the question of legitimacy regarding the actions taken under such an arrangement. Most importantly, where are the so-called technocrats to be collected from and who will choose them? There are always some hopefuls waiting in the wings to get that position. Proximity to the establishment is seen as the credential required to be part of the so-called group of experts. There is no magic wand that they have to turn around the country and solve all our ills. In fact, some of these so-called technocrats have been responsible for many of the problems now facing the country. The solution to our predicament lies within the democratic process, however flawed it may be. There is no shortcut to resolving our chronic structural problems. Ideally, elections are the only way to end the existing political and economic uncertainty. But it can only happen if political forces sit together to agree on a mechanism for free and fair elections. In the absence of an accord, the elections will remain controversial, as we have seen in the past. That would deepen our political crisis.
There is not only a need for a charter of democracy, but also a charter of economy to move the country forward. One can only hope that sanity will prevail. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, January 18, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पंजाब असेंबली बिलाखिर तहलील हो गई है और केपी असेंबली अगले मरहले में ख़त्म होने वाली है। इस पेशरफ्त ने दोनों सूबों में इंतखाबात के अमल को तेज़ कर दिया है। इससे मरकज़ में एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत, जिसकी कौमी असेंबली में मामूली अक्सरियत है, मज़ीद दबाव का शिकार हो गई है। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए ऑप्शंस ख़त्म हो रहे हैं। इख्तिताम का आगाज़ हो चुका है। ये सब गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त शुरू हुआ जब पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ़े की हुकूमत ने पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट हासिल किया। ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक धचका था, जो आखिरी लम्हे तक सूबाई हुकूमत की सफ़ों में कुछ तब्दीलियों की तवक्को कर रही थी। ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून सांपों और सीलियों का खेल हार गई। पार्टी को एक और धचका इस वक्त लगा जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने तमाम तवक्कुआत के बरक्स सूबाई असेंबली तहलील कर दी। इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के पास सूबे में 3 माह के अंदर होने वाले इंतखाबात की तैयारी के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इमरान खान भी इस जंग को इस्लामाबाद ले जाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की कौमी असेंबली में वापसी और वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर करने का इंदिया दिया है। एक और यू-टर्न लेने के बावजूद मखलूत हुकूमत की कमजोरियों को देखते हुए ये साबिक वज़ीर आज़म का एक होशियार कदम होगा। ऐसा लगता है कि इमरान खान को इस बात का एहसास हो गया है कि कौमी असेंबली से अलहदगी उनकी पार्टी को आइंदा आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत की तश्कील के अमल से दूर रख सकती है। कमज़ोर इंतज़ामिया ज़रूरी सख्त फैसले लेने से कासिर है, लेकिन वापसी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि ऐवान में मौजूद पीटीआई के अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफ़े जमा कराए हैं। ये वाज़ेह है कि इमरान खान का असेंबली में वापस जाने का फैसला सियासी तातुल को ख़त्म करने और इंतखाबात के लिए मेकानिज़्म तैयार करने में मदद करने के लिए नहीं बल्कि पीडीएम की हुकूमत को गिराने के लिए है। दरअसल मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में मुमकिना तब्दीलियों की कुछ इत्तलात के साथ वज़ीर आज़म के लिए अपनी अक्सरियत साबित करना एक संगीन चैलेंज हो सकता है। पंजाब की शिकस्त ने यकीनी तौर पर पार्टी पर हौसला शिकन असरात मुरतब किए हैं, हालांकि क़यादत ने बहादुरी का मुजाहिरा किया है। यहाँ तक कि अगर वज़ीर आज़म एतमाद के वोट के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हुक्मरानों की हुकूमत करने की सलाहियत शदीद मुतासिर हुई है। चूँकि 2 बड़े सूबे इंतखाबी मोड में जा रहे हैं और तमाम तर तवज्जो आइंदा सूबाई इंतखाबात पर मरकूज़ है, इसलिए मरकज़ के लिए हुकूमत करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये गैर मामूली बात है कि इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में होंगे। एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा की गई है जिसके सियासी और इंतखाबी अमल पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। कोई भी फरीक अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटने और सूबों और मरकज़ में बैक वक्त इंतखाबात के तरीक़ाकार पर इत्तफ़ाक़ करने को तैयार नहीं है। अगरचे इमरान खान पूरी इमारत गिराने पर बज़िद हैं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो पहले ही खेल हार चुका है और क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात पर राज़ी हो चुका है। मईशत की हालत इंतहाई ख़राब होने की वजह से एक कमज़ोर इंतज़ामिया जो ज़रूरी सख्त फ़ैसले करने से कासिर है, मुल्क को मज़ीद गिरा देगी। वज़ीर ख़ज़ाना मईशत के इंतज़ाम के बारे में अपने अजीब ख़यालात को तर्क नहीं करना चाहते हैं। एक बड़े कमर्शियल बैंकर ने हाल ही में खबरदार किया था कि अगर मौजूदा माशी बहरान से निपटने के लिए फौरी इक़दामात न किए गए तो निज़ाम की नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। परेशान हाल हुकूमत के लिए सूरत हाल तेज़ी से नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है। अगरचे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इसरार है कि कौमी असेंबली अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले तहलील नहीं होगी, लेकिन खेल तेज़ी से इसके हाथ से निकल रहा है। शरीफ ख़ानदान की जमात पहले ही बहुत बड़ा सियासी सरमाया खो चुकी है और उसकी हुक्मरानी को तूल देने से पंजाब में इसके साबिका गढ़ में इसकी हिमायत की बुनियाद मज़ीद कम हो सकती है।
PDM की हुकूमत मईशत की मुकम्मल तबाही की सदारत कर रही है, जिसके मुल्क और जमहूरी अमल पर दूर रस सियासी असरात मुरत्तब होंगे। ये इंतहाई मायूस कुन मंजरनामा ये सवाल भी उठाता है कि क्या इंतखाबात की तारीख के ऐलान से सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करने में मदद मिल सकती है। सियासी दर्जा हरारत को कम करने और इंतखाबात के शेड्यूल और तरीक़ाकार पर संजीदा बहस में दाखिल होने के लिए हरीफ जमातों के मुत्तहिद होने का अभी तक कोई इशारा नहीं मिला है। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान मईशत का क्या होगा। मुल्क में वोटिंग से कबल मईशत को ठीक करने के लिए टेक्नोक्रेट्स की तवील अबूरी हुकूमत के बारे में बहुत सी कियास आराइयां की जा रही है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का ख्याल पेश किया गया था। हमने माजी में भी ऐसी तजावीज़ सुनी है। ये बहुत से लोगों के लिए पुरकशिश लग सकता है जो सियासी निज़ाम से बाहर हमारे बेशुमार सियासी और माशी मसाइल का हल तलाश करते हैं। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी गैर मुंतखब सीट अपने माशी, सियासी और समाजी महाजों पर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस तरह के इंतजामात के तहत उठाए गए इक़दामात के बारे में कानूनी हैसियत का सवाल है। सबसे अहम बात यह है कि नाम निहाद टेक्नोक्रेट्स कहाँ से जमा किए जाएंगे और उनका इंतखाब कौन करेगा। इस पोजीशन को हासिल करने के लिए हमेशा कुछ उम्मीदमंद परों में इंतजार करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत को माहिरीन के नाम निहाद ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी सनद के तौर पर देखा जाता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उन्हें मुल्क भर में घूमना पड़े और हमारी तमाम खराबियों को हल करना पड़े। दर हकीकत इनमें से कुछ नाम निहाद टेक्नोक्रेट्स इस वक्त मुल्क को दरपेश बहुत से मसाइल के जिम्मेदार हैं। हमारी मुश्किलात का हल जमहूरी अमल में मुज़मर है, चाहे वो कितना ही नाक़िस क्यों ना हो। हमारे दायमी साख्ती मसाइल को हल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मिसाली तौर पर मौजूदा सियासी और माशी गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब सियासी क़ुव्वतें मिल बैठकर आज़ादाना और मुंसिफाना इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक़ हों। मुआहदे की अदम मौजूदगी में इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे, जैसा कि हम माजी में देख चुके हैं। इससे हमारा सियासी बहरान मज़ीद गहरा हो जाएगा। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, बल्कि मिसाक मईशत की भी ज़रूरत है। कोई सिर्फ ये उम्मीद कर सकता है कि पाकीज़गी गालिब आएगी। मज़मून निगार मुसन्निफ और सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 18 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.